Closest confidant of Arvind Kejriwal, Member of Parliament of Rajya Sabha, senior Aam Aadmi Party leader Sanjay Singh taken into custody by the Enforcement Directorate that raided his house from 7 a.m. this morning after a day-long grilling. Our leader has been placed under arrest. Let's go straight to our team of reporters tracking every move and update. Tejshri joining us live. Bhavtosh, Priyank Tripathi also on the broadcast. Bhavtosh, to you first. Sum up the day's development. Well, it was early in the morning, just 6:45, when we got an information that ED officers were here at Manish Sisodia, and then it was at around 5:20, at around just before 5:30 that we at 5:30 that we got an information that Sanjay Singh has been arrested. Big developments as far as this case is concerned. This case virtually had come to a standstill after the charge sheets were filed in this case, but it was turning of the two accused in this case. Dinesh Arora, allegedly a close aide of Manish Sisodia, who was the one who was introduced by Sanjay Singh to Manish Sisodia, and also Raghava Mugunta, who turned approver earlier, Sharad Reddy, who had turned approver, that Sanjay Singh role as far as this alleged excise scam is concerned started becoming clear. Various prosecution complaints were filed, Pranesh, that only mentioned the role of Sanjay Singh, but he was never named as an accused either in the case of ED or in the case of CBI. He was never mentioned as an accused, nor he was ever mentioned in the FIRs. He was never ever summoned. But today, quickly in one day, everything happened. He was searched, he was raided, and then summons were served to him. He was arrested, given an arrest memo, then in a very dramatic manner taken out from here. His supporters are in fact have scaled up the wall. They are protesting. Delhi police have in fact said that there are prohibitory orders and that they will in fact be detained. Buses have already come here, and they have been told that if they don't stop the protest, they will eventually be detained. In fact, senior officers have started moving that side. That's the personal residence of Sanjay Singh, and we can expect more dramatic visuals to come from here in next few minutes. Okay, let me turn to Priyank Tripathi. Priyank, Sanjay Singh now being taken to the ED office. Yes, Pranesh, what Bhavtosh was showing is the drama which continues to happen at this main entrance. We will also show you that what is happening on the other side. Let's enter the residence of Sanjay Singh, from where these protesters have been chanting slogan against the Delhi police. What they claim that the Delhi police personnel had charged inside this particular residence of Sanjay Singh, and they were trying to detain those protesters. At this location, you can see the commotion happening. On the other side, you have these supporters of Sanjay Singh who actually charged with the Delhi police protesters. So this is the residence where these protesters came after Sanjay Singh was taken away, and when the Delhi police team entered till this location to pick one of the supporter, that was raised an objection by. They have been saying that it's hooliganism which is happening on the ground. Once Sanjay Singh left, the Delhi police attempted at the location, and the DCP rank officer is having a big argument with the protesters, where he claims that those who had attacked the Delhi police team should be detained because it was caught on camera, but these protesters are starting denying. So high drama continues inside this residence of Sanjay Singh, where the handful of the protesters have locked the gate of the main entrance of Sanjay Singh's house. It is quite possible that the Delhi police could come from the other side. आप लोग यहाँ पे थे, क्या हुआ था? अभी यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता संजय सिंह को डिटेन कर लिया, परिवार के साथ बैठे हैं। पुलिस जबरन आके घुसती है और लाठियां बरसाना शुरू कर दे। संजय सिंह के ड्राइंग रूम में जाके सीसीटीवी लगाए, वहाँ पे गुंडा करती है। हाँ, उन्होंने कहा कि तुम एक बहादुर पति की पत्नी हो, तो इसलिए तुमको बहादुर से काम करना है और परिवार को देखना है। सत्य की लड़ाई में तुम्हारा पति आगे गया है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि सत्य की जीत होगी, असत्य का ना होगा। ये हमारी शुभकामनाएं उनको।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आपको आप क्या रिपब्लिक That was the first response of Sanjay Singh's wife. She's saying this is a clear case of vendetta. Priyank, you were making a point. Go ahead. Okay, action is shifting to the ED office. Tejshri is standing by there. Yes, Tejshri, has the ED team reached there with Sanjay Singh? Well, yes, a few seconds back, Sanjay Singh has reached over here along with the ED officials who took him, and questioning continued for 11 hours. After that, he was arrested, and then he has been brought over here at the headquarters of Enforcement Directorate. You can see that here is a massive security deployment over here. Barricades have been placed at its place, and apart from that, all the senior officials have also come over here to monitor the situation. Remember that Sanjay Singh has just reached over here a while back, and now there was a massive police deployment at each and every gate. But now what we are learning is that few seconds back only he has reached over here. We tried to ask him the questions. We tried to put several questions in front of him, but the vehicles swiftly went inside to the headquarters of Enforcement Directorate. Now, within 24 hours period of time, his medical will be done, and might be possible that the medical will be done inside the headquarters of Enforcement Directorate only, or he could be taken to the hospital. But yes, then tomorrow he will be presented into the court also. Here, what we are giving you the pictures, I would like to give you a 360-degree view here, that what is the situation over here at the ED office, because we have seen that there was a massive ruckus outside the residence of Sanjay Singh. The protesters were protesting against his arrest, and we have seen the protesters also protesting against Aam Aadmi Party and Sanjay Singh outside Aam Aadmi Party office. Those were the protesters from the BJP, and of course now it is a certainly massive setback, political setback also for Aam Aadmi Party, because Sanjay Singh, what Aam Aadmi Party says, has been very much vocal about raising questions against the BJP, against opposition, against particularly Prime Minister Narendra Modi. Right, stay with us, Tejshri Bhavtosh. Priyank, we'll keep coming back to you. Let's open this up. Nighat Abbas joining us from the BJP. Dr. Sumansi Raman also with us. Dr. Raman, while we are playing out these live pictures from outside the ED headquarters, let's talk about the reactions pouring in. Leaders of India bloc have called it witch hunt, vendetta action. Yeah, Pranesh, before you came on and Padmaja was there, I had asked a couple of questions. One was the Enforcement Directorate had actually issued a letter of apology to Sanjay Singh in the month of May for quote unquote by mistake including his name in the case sheet, in the charge sheet. So therefore, subsequently, Mr. Sanjay Singh went on the offensive. He wrote to the Finance Ministry asking for permission to prosecute the Enforcement Directorate Director and the Deputy Director for defamation. So I think that the Enforcement Directorate might have had two possible reasons for this arrest. One, obviously, the fact that Sanjay Singh was going hard at them. And also, you know, to sort of try to deny bail in the Manish Sisodia case by using this as an excuse, saying that, you know, we have got more new evidence. Two more people have turned up provers. So this can be used to say that they need more time to complete the investigation and therefore Sisodia should not be given bail. So there are two possible reasons why this could have been done. But so far, there has been no evidence which has been put out in the public domain of any money trail. Though there are lots of statements of various people saying, I gave 4 crores here, I gave 3 crores to somebody, I gave 2.5 crores to Sisodia and so on. But so far, at least to whatever knowledge that has been put out in the public domain, we have not been able to see a money trail that has been. Okay, let's cut straight to the Aam Aadmi Party news conference. Dr. Raman, I'm sorry, I'll come back to you. क्योंकि ग्राउंड पे स्थिति बहुत खराब है. महिला आरक्षण करने की कोशिश कर रहे हैं, गैस सिलेंडर सस्ता करने की कोशिश कर रहे हैं. कल भारत के जाने माने बड़े बड़े पत्रकार जो बेखौफ
निडर के जनता के सवाल केंद्र सरकार से करते हैं, उनके घरों पे छापे मारे गए, उनको पुलिस थाने ले जाया गया, सुबह से शाम तक पूछताछ की गई, उनको देशद्रोही बताने की कोशिश की, और आज भारतीय संसद में लोगों की सबसे मजबूत आवाज संजय सिंह जी को जिस तरीके से बिना किसी सबूत, बिना किसी ठोस कारण गिरफ्तार किया गया है, ये बात साबित होती है कि प्रधानमंत्री जी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी चुनाव हार रहे हैं और निराशा है, हार का डर है, बौखलाहट है, डेस्परेशन है, जिसमें अब इस तरीके के उलझुल काम केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों से करा रही है। और हर एक सरकार जो तानाशाही की तरफ बढ़ती है, उसके लक्षण होते हैं कि जब सत्ता जा रही होती है तो इस तरीके के कारनामे सामने आते हैं, और इसकी वजह से सत्ता बची किसी की नहीं है। इसकी वजह से सत्ता और तेजी से हाथ से फिसलती चली जाती है। और आप देखेंगे, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद करिएगा, 2024 के चुनाव के बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं दोबारा से ट्वीट करूंगा कि ये जो बौखलाहट थी, इससे भी भारतीय जनता पार्टी का कोई फायदा नहीं हुआ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आतिशी जी जो है अपनी बात रखेंगे, उसके बाद प्रियंका जी। पिछले 15 महीने से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार, उनकी सारी एजेंसीज, उस एजेंसीज के सैकड़ों अफसर सिर्फ एक काम में लगे हुए हैं कि किसी तरह से इस तथाकथित शराब घोटाले में उन्हें 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत मिल जाए आम आदमी पार्टी के खिलाफ। लेकिन 1 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद, एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसमें सैकड़ों अफसर ईडी के काम कर रहे हैं, सैकड़ों अफसर सीबीआई के काम कर रहे हैं, अपने बाकी सारे इन्वेस्टिगेशंस छोड़ के सारी टीम तथाकथित शराब घोटाले पे लगी हुई है। लेकिन 15 महीने के बाद भी 1 रुपए के भ्रष्टाचार का सबूत भारतीय जनता पार्टी की एक भी एजेंसी देश के सामने नहीं रख पाई है। आज जो संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया है, वो गिरफ्तारी भी बिना किसी सबूत के आज की गई है। ये गिरफ्तारी क्यों हुई है संजय सिंह जी की? इसलिए नहीं कि कोई सबूत है, इसलिए नहीं कि कोई शराब घोटाला हुआ है, इसलिए नहीं कि 1 पैसे का भी भ्रष्टाचार का खुलासा कर पाई है ईडी और सीबीआई। आज संजय सिंह जी का अरेस्ट सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों से डर लगता है, आम आदमी पार्टी से डर लगता है, संजय सिंह से डर लगता है। हम ये देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो ये बौखलाहट है, जो ये हार की बौखलाहट है, अब इस प्रकार की तानाशाही के रूप में सामने आ रही है। हमने कल ही देखा कि देश के जाने माने पत्रकारों के घर पर रेड हुई, उनको डिटेन किया गया, उनके फोन ले लिए गए, उनके लैपटॉप ले लिए गए। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। कल शाम को हमने देखा कि किस तरह से टीएमसी के सांसद
जब कृषि भवन गए, कृषि मंत्री से मिलने की कोशिश करी, किसानों की आवाज उठाने की कोशिश करी, तो टीएमसी के सांसदों को किस तरह से घसीट घसीट कर पुलिस ने कृषि भवन से बाहर निकाला। आज हमने देखा कि आज सुबह ही संजय सिंह जी के घर पहुंच गए और 8 घंटे तक ईडी संजय सिंह जी के घर में बैठी रही। एक घर जिसमें मात्र 4 कमरे हैं, उन्हें पूरी अपनी छानबीन करने में भी 1 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगता। 4 कमरे के घर में रहते हैं संजय सिंह जी। लेकिन ये पहले से एक प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट था कि जाएंगे, 8 घंटे बैठेंगे और फिर कहेंगे कि 8 घंटे की पूछताछ के बाद संजय सिंह जी की गिरफ्तारी कर। ये भारतीय जनता पार्टी की हार की बौखलाहट को दिखा रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हार की बौखलाहट को दिखा रहा है। आज उनको भी पता है कि चाहे आने वाले 4 राज्यों के चुनाव हो, चाहे 2024 का लोकसभा का चुनाव हो, देश की जनता ने अब भारतीय जनता पार्टी को बाहर फेंकने का मन बना लिया है। और जब भी कोई तानाशाही की सरकार देखती है कि उनका समय आ गया है, तो उसके बाद यही सिलसिला शुरू होता है कि जो उनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और यही सिलसिला आज भारत में शुरू हो गया है कि चाहे पत्रकार हो, चाहे विपक्ष के नेता हो, उनको एक एक करके चुप करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहती हूं कि हम आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं। हम आपकी इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। आप चाहे आम आदमी पार्टी के हर नेता को जेल भेज दो, आप चाहे हमें फांसी पे टांग दो, लेकिन आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक विधायक, हर एक सांसद, हर एक नेता इस देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ता रहेगा।